Hello learners. Some students ask that, ma'am, I know about the writing style, I know about the chapter, about the poem and the lesson, but I failed to score 50 or 60% in my exams. Why so? The simple answer is art of writing. And you know what? Writing is an art. And the student who knows about the writing, they score good. Actually marvelous. Or the better one, why so? I'm sharing my secrets, which I used in my master's exam and secured good marks as well, gold medal in my exam. But before that, I have an anecdote to share that I did BSc in non-medical and then I pursued masters in English. And you know what? Being a science student, I was not able to write properly in my master's exam. So there are some tips actually which I followed in my exam time, and it helped me a lot to secure good marks and a position as well. So listen carefully and understand the art of writing. देखिए, जब हम आंसर लिखते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है. It's like we have to keep in mind that what actually the question is demanding. Suppose अगर क्वेश्चन एनालिसिस पे है या एक्सप्लेनेशन पे है या फिर यू कैन से एलिसिडेट करना है या कंपेयर और कंट्रास्ट करना है बट व्हाट वी आर डूइंग वी आर जस्ट राइटिंग द समरी एंड एक्सपेक्टिंग अ गुड मार्क दैट्स नॉट राइट एंड दैट्स नॉट इवन जस्टिस सो जस्ट कीप इट इन माइंड दैट द फर्स्ट थिंग इज व्हाट एक्चुअली द क्वेश्चन इज डिमांडिंग ओके कि हमें कंपेयर कंट्रास्ट करना है, हमें एक्सप्लेनेशन देनी है, हमें क्रिटिकल एनालाइज करना है. So take a deep breath for 1 or 2 seconds and then write your answer. The second most important thing is have a good introduction. जैसे आप कभी इंट्रोडक्शन देते हैं अपना and you try to give text. So in answer you have to write a best answer. For instance, they ask write down thematic aspect of lost spring. So before explaining low spring and before writing summary, just keep it in mind that सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन बताना है कि लो स्प्रिंग चैप्टर में क्या क्या है एग्जैक्टली. तो आपको उस चैप्टर का जिस्ट कहते हैं देखिए GIST जिस्ट उसको वो बताना है 2 या 3 लाइन में कि लो स्प्रिंग के अंदर ये है फलानी फलानी चीज़ है उसके अंदर हमारा ये करेक्टर है. द सेंट्रल आइडिया हमें उस इंट्रोडक्शन में बताना है और उसमें बेटर if you write about the name of chapter, about the writer, and underline it. Like this chapter, Low Spring, is written by XYZ writer. Okay, so have these kinds of phrases in your mind. The third important thing: use paragraph technique instead of an essay. So make paragraph 4 or 5 and 6 and 7 paragraph of around 67 lines. So it actually depends on the marks. Have a good paragraph because in last examiner wants a clear answer instead of cluttering one. So in paragraph you have to explain about the low spring. Like in first paragraph you explain the thematic aspect. Like in the low spring ये चीजें बताई गई हैं, ये चीजें पूछी गई हैं, author ने ये कहा है. Okay. बट इन सेकंड और थर्ड पैराग्राफ और फोर्थ पैराग्राफ आंसर में आपको लाइन कोट करनी है जो हमारी एग्जैक्ट चैप्टर के अंदर जो बताई गई है. अगर पोएम के अंदर कोई लाइन है तो वी हैव टू कोट इट इन आवर आंसर. इन्वर्टेड कोमा में करिए और आप उसको लिखिए या फिर आप अंडरलाइन कर लीजिए. ओके, इट मेक्स वेरी इफेक्टिव आंसर. द थर्ड थिंग add some critic statement. Okay, you have to add the author statement regarding that chapter or any critic statement regarding the chapter, whether it is a good or the bad one. The third thing you can add is if you have any other work which is comparable, तो उसको आप कोट करिए, उसको आप यहाँ पे लिखिए कि भाई इस वर्क जैसा एक और वर्क है जिसमें भी सेम आइडिया है, सेम आस्पेक्ट हमें बताया गया है. तो एग्जामिनर को क्या लगता है ना कि इट इज वेरी गुड वन दैट द बच्चा हैज गुड नॉलेज. Sometimes one of my teacher has told me that we have to befool the examiner in paper.
तो यू शुड नो अबाउट द आर्ट ऑफ द फूलिंग, वैसे तो सबको आती है। तो द अदर थिंग इज दैट हैव सम पोएटिक और लिटरेरी डिवाइस। मान लो कोई बहुत बढ़िया लाइन है, तो आपको उसका लिटरेरी डिवाइस या पोएटिक डिवाइस के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज देयर एनी मेटाफर, सिमिली, और वी हैव पैराडॉक्स और पर्सनिफिकेशन एग्जैक्टली। So it is very effective. The next thing is that using alignment. ओके, ऐसा नहीं है कि आप एक लाइन यहाँ से शुरू कर रहे हैं और उसको लास्ट में खत्म कर रहे हो, फिर एक आधी लाइन जा रही है, फिर वो एक पूरी लाइन जा रही है, तो इस तरह से नहीं करना है। एक प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए कि हाँ, आपको स्केल की जरूरत है तो आप मान लीजिए, बट मुझे तो लगता है आपके आंसर में ही एक माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे बहुत तमीज से लिखना है, लाइक न्यूज़पेपर का आर्टिकल आपने देखा होगा। Okay. The next thing we have to add in some phrases. We have to add some like accordingly or in a nutshell or I'm supposed to say. So these kind of phrases you have to add in an answer. इस टेक्निक को आप किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी में कर लीजिए, पंजाबी में कर लीजिए, इट डिपेंड्स, क्योंकि टेक्निक सारी वही होती है, एक सब्जेक्ट का नेचर अलग होता है बस। ओके, एंड एंड इन लास्ट में your conclusion should be valid. It should match with introduction or the paragraph. ऐसा नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन में पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें बता रहे हैं, लो स्प्रे में ये होता है वो होता है, और कंक्लूजन तक जाते जाते आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है और आप उसको बिल्कुल ही कुछ अलग ही कर देते हैं कि मतलब एग्जामिनर सोचने पड़ जाता है कि ऊपर कुछ और लिखा था आइडिया और नीचे कुछ और आइडिया। तो कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन ये आपसे मैच करने चाहिए, मैच इन द सेंस कि एग्जैक्ट वही नहीं लिखना, बट आइडियाज मैच करने चाहिए कि हाँ, आप इन्हीं चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। और कंक्लूजन में आपने मान लो 5 पैराग्राफ है, तो उन पाँचों का एक क्रक्स बना करके कंक्लूजन में लिखना है कि भाई मैंने 5 पैराग्राफ में ये बताया, तो मेरा ये आंसर है। ठीक है, so keep it in mind. Make a good introduction, have good paragraph, use literary devices, and have a good conclusion. And besides that, the important thing which we have to reject or we have to neglect or we have to ignore that अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो प्लीज वो एक क्या कहते हैं ना, एक ही वर्ड को मान लो गलत हो जाए और उसको फिर हम टाइम घिसते रहते हैं, तो हमें भी हैव टू अवॉइड दिस थिंग। जस्ट एक ब्रैकेट बनाइए, एक सिंपल कट कीजिए, खत्म, या फिर आप एक सिंपल कट कर दीजिए, फिनिश। उसे ऐसे फटाफट फटाफट प्लीज ऐसे मत कीजिएगा, बुरा भी मत कीजिएगा, अदरवाइज क्या होता है ना इससे एग्जामिनर को लगता है कि मतलब क्या ही लिखा था इसमें, इतनी मिस्टेक्स हैं, तो वो ज़्यादा हाईलाइट होती है, तो उसको इग्नोर करना है। द सेकंड थिंग इज दैट सपोज आपका कोई पैराग्राफ लिखेगा, सेम आप ब्रैकेट लगा दीजिए, उसको छोटा सा कट कर दीजिए, ऐसे ऐसे अवॉइड करना है। The other thing is that use a good pen instead of इंक फैल जाती है, तो इस तरह की चीज़ों को आप अवॉइड करो, अदरवाइज आप खुद कॉन्शियस हो जाओगे। यू नो व्हाट, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है जैसे कि मान लो मास्टर्स में पेपर होता है तो हमें एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से करना होता है, लाइक हमारे पास 3 घंटे होते हैं, वी हैव टू राइट 5 or 6 आंसर विच कैरी गुड पेजेस। तो हमें क्या करना है, हमें टाइम मैनेजमेंट देख के चलना है कि हमें डेली आंसर प्रैक्टिस करनी है, सो दैट हमको एग्जाम में परेशानी ना हो, स्पीड की इशू ना हो। तो जब एग्जाम आने वाले होते हैं ना, उसी से हमें महीने 2 महीने पहले ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। ओके, और द स्टूडेंट्स ऑफ 11th 12th क्लास, तो हमें तो डेली हमेशा आंसर लिखते रहना चाहिए। तो ग्रेजुअली क्या होता है कि आपकी जो पैसिव वोकैब है, इट कम्स इन योर एक्टिव माइंड एंड इट हेल्प्स यू अ लॉट इन योर एग्जाम। So practice and answer daily. Read newspaper or you are literature student. So read novels, poems thoroughly and have a good vocab and understand the words exactly. Because our LSRW, listening, reading, speaking and writing, they all are interconnected. When you read a book, so the vocab comes in your mind, and when vocab comes in mind, gradually it goes in passive mind, and when you write an answer or you speak very well and use those words, so it naturally आपकी एक्टिव माइंड में आ जाती है एंड देन इट हेल्प यू एंड यू बिकम अ गुड स्पीकर। तो क्या करना है, हमें पढ़ते रहना है, ओके, हमें कनेक्ट रहना है बुक से, हमें अपने नॉवेल्स को, अपने ड्रामास को, प्लेस को पढ़ते रहना है, पोएम की अंडरस्टैंडिंग लेना अच्छे से, और हमें फिर उस हिसाब से उसको लिखना है खुद से। हमें यहाँ वहाँ से देख के आंसर नहीं लिखना, हमें खुद की अंडरस्टैंडिंग से आंसर लिखना है ताकि वो हमारे को हेल्प करे आगे। ओके, तो हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है।
So in nutshell, I can say that time management is very important and understand the question what is actually demanding. Have a good intro, good conclusion, and make paragraphs and add quotations and critical statements of writer as well as critics and have poetic devices and literary devices. I think this is enough and you will get a good answer. I hope you like this video. Bye bye. Take care and stay connected.